Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday, I was explaining you about the important questions in the hydrogen and its compounds. There are important three SAQs are there in the hydrogen and its compounds. First one is, what is that? Write about the types of covalent hydrides. Write about the types of types of covalent hydrides. Types of covalent hydrides. You know that the hydrides in which covalent bonds are there, those are called as covalent hydrides. Generally, third A and fourth A and fifth and sixth A group non-metals combines with hydrogen and form these type of the covalent hydrides. These covalent hydrides are of three types. First one, electron deficient hydrides, hydrides. Second one, electron precise hydrides, Third one, electron rich hydrides. Electron deficient hydrides are those hydrides in which in their lost shell of the central element only 6 electrons are present. Third A group element generally combines with the hydrogen and forms these type of the hydrides. BH3 on the boron BH3 में boron के last shell में 6 electrons है. They are in need of the 2 electron to get the octet. That's why these are called as the electron deficient hydrides. Third A group element hydrides are deficient in electrons, deficient to get the octet rule. There are 2 electrons are short to get the octet rule. Therefore, these are called as electron deficient hydrides. Third A group elements combines with hydrogen and forms the hydrides in which on the central element only 6 electrons are present. Therefore, these are called as electron deficient. Example BH3, AlH3. And the second type of the covalent hydride is electron precise. Electron precise hydrides are the fourth A group element hydrides. Example CH4. On the central element हाइड्राइड्स फॉर्म होने के बाद में जो एलिमेंट है सेंट्रल एलिमेंट इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट आ गया, ऐसे हाइड्राइड्स को प्रिसाइज हाइड्राइड्स बोल के बुलाते हैं. SiH4, CH4, these are the examples for the electron precise hydride. Fifth A or sixth A group element hydrides, for example NH3. Okay, lone pairs are present. These type of the hydrides are called as electron rich hydrides. This thing I was explained in last class. Okay, ये हो गया. ये important questions में से एक question है. Write about the types of covalent hydrides. This is in which chapter पे ये hydrogen and its compounds का important SAQ है. And the second SAQ in this chapter, hydrogen and compounds से second SAQ क्या है भाई? removal of permanent hardness. Permanent hardness, removal of the permanent hardness by ion exchange method. Cations are exchanged generally in this method, so that is also called as ion exchange method. In this zeolite and Kalgan method is there. चलिए अब थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ मैं. What is the zeolite? इसके बारे में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. Sodium aluminum orthosilicate Na2Al2Si2O8.X-H2O. This is the material is called as zeolite. Commercially available zeolite is also known as called as permotite. When the hard water, this is the container. When the hard water is passed through this zeolite, the hard water को मैं zeolite से pass करा.
So the hot water is passed through the container in which zeolite is present. So at here reaction takes place. Simply I am writing the zeolite like the Na2Z. So all the cations present in the hard water, all the cations mean what? Generally in the hard water, permanent hot water में calcium and magnesium cations रहते. So these calcium and magnesium ions are get absorbed. या जियोलाइट पे यहाँ पे absorb हो जाते, सोडियम आयन एक्सचेंज होते, तो यहाँ पे CaZ आता प्लस Cl2Na प्लस आयन्स रिलीज हो रहे हैं. अगर Mg रहा तो भी यहाँ पे MgZ आता प्लस 2Na प्लस आयन्स रिलीज हो रहे हैं. तो cations are salts are break down and cations are get absorbed on this. Okay, so by means of this hotness is removed, we will get the water without the salts. So this is the one method is called as which method? A zeolite method. The another method is there that is called as the Kalgan method. Sodium hexametaphosphates are called as Kalgan. Na2Na4PO3 taken 6. Sodium hexametaphosphate is called as Kalgan. When hard water is passed through this Kalgan, Ca plus ions, magnesium plus 2, Ca plus 2 ions which are present in this hard water और adsorbed. यहाँ पे रिएक्शन होता भाई सेम वैसे इससे पहले जो लिखा हमें इसकी जगह Ca इंस्टेड ऑफ द ब्रैकेट भी लिख सकते हैं आप Ca, तो यहाँ Na4 सिंपली ऐसा लिखो आप PO3 6 times. Okay, this Ca plus and magnesium plus ions are get absorbed on this Kalgan. As a result of that, what happened? Hardness is removed. This is another method for the removal of the hardness of the water. So then after that ये removal of hotness के बाद में types of covalent hydride बोला, removal of the hotness बोल के ये एक है, और utility of the hydrogenous fuel परसों पूछा बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि combustible energy हाइड्रोजन के ज़्यादा है तो उसको डायरेक्ट फ्यूल के ऐसा यूज़ करते. तो मटेरियल में सीधा सीधा आप पढ़ लीजिए, आप उसमें फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं. हाइड्रोजन combustible energy is more, therefore it is used as fuel. इसको फ्यूल में फ्यूल कैसा यूज करते. नेक्स्ट उसके बाद वेल्डिंग्स में इसको यूज करते, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च के अंदर इसको यूज करते. नेक्स्ट आफ्टर दैट एलपीजी इंस्टेड ऑफ एलपीजी इसको सिलेंडर्स में यूज कर रहे हैं भाई. सो ऑल दिस आर द यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन इन विच हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल. फिर उसके बाद में फ्यूल गैसेस में वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है. इन दैट मेन कंपोजिशन इज द मेन constituent of the water gas and semi-water gas, cool gas, or in all these gases hydrogen gas is present. So this is about the utility of the hydrogen as fuel. फिर उसके बाद में the next thing is about the D2O और D2O के बारे में. इसको heavy water बोल के बुलाते हैं. Heavy water is the D2O because hydrogen second isotope is present. You know that there are three isotopes of hydrogens are present, 1H1, 1H2, 1H3. There are three isotopes are there. By using these three isotopes, we can get the six type of the water molecules. First one, दो hydrogens मिला लो H2O आ जाता. दो hydrogens की जगह deuteriums मिला लो D2O आता. और नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिटियम मिला दो आपको क्या आता, T2O आता. ओके, हाइड्रोजन ये देखिए H2O है, ये ड्यूटीर ऑक्साइड है, ये T2O है. सो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के लिखा, और एक कौन सा मॉलिक्यूल है भाई HDO, और एक कौन सा है HTO. ओके, so there are how many water molecules are possible? This type TTO, 6 water molecule आ सकते. अब ये सब रहने दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, what is D2O इसके बारे में समझा रहा हूँ. This is the second isotope of the hydrogen. ओके, इसको heavy water, हाइड्रोजन से वजन रहता, 1H1 प्रोटियम से वजन रहता, इसीलिए इसको क्या बोल के बुला रहे हैं बोले तो D2O heavy water बोल के बुला रहे हैं. So this is present in our ordinary water only. 6000 ordinary water के molecules है, तो आपको 1% आपको 1 molecule आपको D2O मिलता.
by the prolonged electrolysis of the ordinary water, we will get the D2O. ओके, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड. ज़्यादा प्रिपरेशन मेथड के बारे में नहीं पूछ रहा बेटा. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, व्हाट इज ड्यूटीरोलाइसिस है. ड्यूटीरोलाइसिस क्या होता है ये थोड़ा आप देख लीजिए. आप वाटर से मिलने को, H2O से मिलने को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं. कौन से भी सॉल्ट्स है भाई, AlCl3 ले लो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, D2O से मिला रहा हूँ, 3D2O, 3D2O. Okay, AlCl3 plus 3D2O. This is the reaction of the salts with the D2O. Reaction of the salts with D2O is called as deuterolysis. Al की जगह OD, OH की जगह OD, second 3 ले लेना, plus 3DCl. So this is the reaction. Reaction of the salts with the D2O is called as deuterolysis. AlCl3 plus 3D2O, get the AlOD3 and DCl. This is the reaction is called as deuterolysis step of the reaction. Next about the what are the uses of this D2O. ये D2O के uses क्या है इसके बारे में. Uses में first use is it is used in the preparation of D2 gas. D2 gas के preparation में इस्तेमाल में आता. Next it is used as the moderator in the nuclear reactor. Moderator के ऐसा use आता, moderator यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की वेलोसिटी, न्यूट्रॉन, दिस इज यूज्ड टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, वरना ब्लास्ट हो जाता, एनर्जी अपने को नहीं मिलती. न्यूक्लियर रिएक्टर इज द कंट्रोल्ड वे ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के वास्ते यहाँ पे D2O को यूज कर रहे हैं. तो वो कंट्रोल किसकी वजह से होता, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कम करने से होता. न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कौन कम कर रहा, D2O न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कम कर रहा. सो दिस इज द मॉडरेटर, दिस इज यूज्ड एज द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. एंड द थर्ड यूज ये D2O में, और एक यूज क्या है, टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस. इसको ट्रेस स्ट्रक्चर्स मालूम करने के वास्ते, मैकेनिज्म कैसा हो रहा मालूम करने के वास्ते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म मालूम करने के लिए D2O को यूज करते. सो इसको ट्रेसर बोल के भी बुलाते और मॉडरेटर बोलते. और एक जो है D2 गैस के प्रिपरेशन में D2O को यूज कर रहे हैं. ये VSA क्यों है भाई, D2O के यूजेस के बारे में लिखो बोले तो ये लिखना. एंड D2O इज द टॉक्सिक वन. इसको पानी के वास्ते, पीने के वास्ते यूज नहीं करते. एंड सीड्स भी जर्मिनेट नहीं होते. when the D2O is there, seeds are not germinated. So this is about the D2O. Now then another important hydrogen compound is there, that is the hydrogen peroxide. This is the important one, hydrogen peroxide, because peroxy bond is present, therefore it is called as the hydrogen peroxide. So it has open book shape like this. This is the shape of the H2O2. In the spine of this book, peroxy bond is present. O bond, O is called as the which bond? Peroxy bond. Dihedral angle is 190 degrees. This is about the dihedral angle and the structure of the H2O2. The peroxy bond is present on the spine of this book. बीच में सेंटर में peroxy bond है. Now अपना जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहा. सो write the preparation of hydrogen peroxide. Okay, we are using two methods. First one is the laboratory method. Laboratory method में, और second method electrolytic method है. Lab में barium peroxide BaO2 is when treated with the cold H2SO4 से react करते हैं. As a result of this combined with this. Okay, now next one H2O2 form हो रहा और BaSO4. When H2O2, when barium peroxide is treated with the H2SO4, hydrogen peroxide is formed, and sodium peroxide, Na2O2, sodium peroxide. When sodium peroxide is treated with the Na2SO4, Na2SO4. Once again, यहाँ पे H2O2 form हो रहा भाई, H2O2 plus Na2SO4. So these are the laboratory methods for the preparation of the H2O2. So in the laboratory, H2O2 is prepared by the reaction of the
cold H2SO4 on the barium peroxide or sodium peroxide. So this is about the laboratory method for the preparation of H2O2. And another method is the auto oxidation method is there. Auto oxidation method. This is the another method called as the anthraquinol ethyl 2 ethyl anthra, ओके यहाँ पे डाल लो आप 2 ethyl anthraquinol है, anthraquinol क्विनॉल, ओके व्हेन इट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन गैस इज पास्ड, इससे ऑक्सीजन गैस पास कर लिए या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होते, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल गेट दी अनदर वन, इसको क्या बोलते हैं, ये एंथ्राक्विनोन बोलते हैं इसको, एंथ्राक्विनोन. Once again 2 ethyl anthraquinone and H2O2 is formed. So अपना H2O2 आ गया फिर. Now then साइक्लिक प्रोसेस है, इससे फिर क्या करते, ये जो भी आ गया ना इसको क्या करते हैं, पैलाडियम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में रिड्यूस करते, H2 मिलाते, फिर एंथ्राक्विनोन जाके, एंथ्राक्विनोन है quinone upon reduction that gives the anthraquinol, and it is a cyclic process. First anthraquinol लिए, it is dissolved in solvent and oxygen gas is passed in it. As a result we will get the 2 ethyl anthraquinone and H2O2, and upon reduction of the anthraquinone once you will get the, once again you will get this one anthraquinol आता. This is the cyclic process in this H2O2 is prepared. This is the second type of the preparation method, and the third preparation method is the electrolytic method for the preparation of the H2O2. Electrolytic method for the preparation of H2O2. So in this method, cold H2SO4 50% concentrated H2SO4 कैसा है भाई, वो cold है. How much percentage? 50% concentrated H2SO4 is used in this method by using the electrodes cathode and anode, platinum and lead wires which are used as the cathode and anode. H2SO4 is electrolyzed. As a result of that, you see that ionization of the H2SO4 takes place. So H2SO4, 2H2SO4 ले लो भाई, 2HSO4 minus, okay, और plus 2H plus ions release हो रहे हैं, ये एक reaction है called as the ionization. Then after that 2H plus ions है ना, ये electrons को ले लेते, that is converted to H plus ions or converted to H2. Now this is takes place at what? Cathode and at anode, 2H plus 2HSO4 minus ions or get oxidized, electron को lose कर लेते ये. As a result of that H2SO8 fuming sulfuric acid oleum form होती, plus 2 electron. So this is the reaction takes place at anode. फिर से repeat कर रहा हूँ, when ice cold 50% concentrated H2SO4 solution is electrolyzed by using platinum and lead wires as cathode and anode, following reactions are takes place in the cell, and as a result of that at the anode H2S2O8 is formed, and at the cathode hydrogen gas is liberated. When H2S2O8 is treated with the water, देखिए पानी से मिला रहा हूँ H2O, तो once again क्या फॉर्म हो रहा भाई, 2H2O ले लो, तो क्या फॉर्म होता, 2H2SO4 फॉर्म होता प्लस H2O2 गैस लिबरेट होती, जो आ रहा वो 30% कॉन्सेंट्रेटेड H2O2 रहता, इसको पर हाइड्रल बोल के भी बुलाते हैं. This is about the preparation of the hydrogen peroxide with the help of the electrolytic method. Now then you see the properties of the hydrogen peroxide. It acts as the both oxidizing agent and reducing agent, and also forms the additional products with the salts. Okay, so it is acts as the oxidizing agent. A important question है, write any two oxidizing and reducing properties of the hydrogen peroxides. Oxidizing and reducing properties. Oxidizing and reducing properties of H2O2. Justify how hydrogen peroxide
is acts as the both oxidizing and reducing agent. That is your question. In that, first I am writing the oxidizing properties, oxidizing properties, oxidizing properties of H2O2. See that in this H2O2 oxidize the other compound. For example, black color lead sulfide PbS. PbS is the black colored substance. Okay, when it is treated with the, when it is washed with the H2O2, a black color का lead paintings generally रहते बेटा, lead paintings different colors में रहते हैं, मगर थोड़े दिन के बाद में वो ब्लैक कलर में तब्दील होते, फिर उसको रीजनरेट करने H2O2 से वॉश करते. So old lead paintings are regenerated when the old lead paintings are treated or washed with the H2O2. During that course, lead sulfide black colored compound is oxidized as to white color lead sulfate. Sulfide is oxidized as to sulfate. PbS is converted to what? PbSO4. Each H2O2 molecule gives the one oxygen to the sulfur. 4 H2O2 ले रहा हूँ तो PbSO4 बना, 4 H2O2 की जगह फिर 4 H2O डाल लेना. So lead sulfide is oxidized as to lead sulfate. See that in the left side with the sulfur there are no oxygen atoms. In the right side with the sulfur 4 oxygen atoms are there. Left side में sulfur के साथ नहीं है, right side में ये कंपाउंड में ऑक्सीजन आए तो ये ऑक्सीडाइज हुआ और इनऑक्सीडाइज करा तो H2O2 acts as the oxidizing agent. So this is the first one, lead sulfide is oxidized as to lead sulfate. And the second one, I am taking this one, potassium iodide Ki, 2Ki plus H2O2, 2Ki plus H2O2. Potassium iodide when treated with the H2O2, 2Ki जाके क्या बन रहा भाई, H2O2 को ऐसा भी लिख ले रहा हूँ, देखिए H2O2, तो 2Ki जाके क्या बना यहाँ पे, 2KOH, ये OH इधर मिल गया तो 2KOH बन गया and I2 is liberated. See that in this Ki, oxidation state of the iodine is -1. In the right side, oxidation state of the iodine is 0. That means decrease or increase in the oxidation state takes place, -1 to 0, and it is the another oxidation property. Next I am taking this one, HCHO. It is the formaldehyde. फॉर्मल्डिहाइड को मैं H2O2 मिला लिया. ओके, अलग अलग प्रॉपर्टीज है बेटा ऑक्सीडेशन में, जो इजी है वो पढ़ा रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में. फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस H2O2. फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एज टू फॉर्मिक एसिड प्लस H2O2 जाके H2O बनता. सो दीज आर द सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ये थोड़े ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है. So see the reducing properties of this H2O2. Oxidizing में lead sulfide is oxidized to lead sulfate. Potassium iodide is oxidized to iodine. HCHO formaldehyde is oxidized to formic acid. Now I'm writing this reducing properties. Reducing properties में आप Ag2O ले लो, सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड को H2O2 मिला लिया मैं. Ag2O when treated with the H2O2, as a result of that you will get the 2Ag आ गया प्लस H2O आ गया, यहाँ का एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मिलता प्लस O2 गैस. सो दिस इज द रिडक्शन प्रॉपर्टी बिकॉज लेफ्ट साइड Ag के साथ में O है, राइट साइड में Ag के साथ O नहीं है, तो ऑक्सीजन कम हुआ, therefore it is the reduction property. Silver oxide is reduces to silver. Next one, another property, यहाँ बेरियम पेरोक्साइड ले लो BaO2. ओके, लेड डाइऑक्साइड भी रहने दो, बेरियम पेरोक्साइड भी रहने दो. सो H2O2 से मिला लिए, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट BaO2 जाके BaO बनता प्लस H2O बनता प्लस O2 बनता. दिस इज अनदर वन. नेक्स्ट आई एम राइटिंग दिस वन, H2 ले लो. ओके, प्लस H2 नहीं, हाँ Br2 ले लो प्लस H2O से मिला लो, H2O2 प्लस Br2. ओके, नहीं तो H2O2 प्लस Cl2.
Oxidation state of the Br bromine in the Br2 is 0. Oxidation state of the chlorine in the Cl2 is 0. Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 में 0 है. सिमिलर एलिमेंट से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता. When H2O2 is added to the Br2, what is the product is formed? HBr. HBr plus O2. In this oxidation state of the Br is -1. In this reaction, 2HCl is formed. This is the oxidation state of the Cl. 0 से -1 हुआ, decrease हुआ. So this is the reduction property. So I was explained these three reduction properties. Silver oxide is reduces to silver. Barium peroxide is reduces to barium monoxide. Lead dioxide is reduces to lead monoxide. And here Br2 is reduces to HBr and Cl2 is reduces to HCl. Okay, this is about the oxidizing and reducing properties of H2O2. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 के बारे में समझाया. और यूजेस ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एंटीसेप्टिक कैसा यूज करते और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्लीचिंग एजेंट कैसा यूज करते. ब्लीचिंग एजेंट अमोनिया प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दोनों को मिला के ह्यूमन हेयर को ब्लीच करते. ब्लैक कलर हेयर इज कन्वर्टेड टू गोल्डन येलो कलर. सो दिस इज द ब्लीचिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड एज द एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक और ब्लीचिंग एजेंट कैसा यूज होता. सो दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, दिस कंप्लीट दिस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें मैं कंप्लीट कर दिया. सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स. द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चैप्टर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ले रहा हूँ. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फोर्थ ए ग्रुप एंड थर्ड ए ग्रुप है. पहले फोर्थ ए करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड ए करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, इससे ये सिलेबस हो जाता. नो देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट क्लास में मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के थोड़े आंसर समझाया था. सो और साथ में हाइड्रोजन कंपाउंड स्टार्ट करा था. आज हाइड्रोजन कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया मैं. नो देन पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. So p block elements, those elements in which last electron is present in the p orbital are known as p block elements. Okay, p block elements are present in the right side of the periodic table. So see that in the right side there are 6 columns are present. So among them first one is the third A group and second one is the fourth A group. Now next one is the fifth A group and next one is the sixth A group and the one seventh A group. Now these are the zero group elements. In first year these two groups are given, third A and fourth A, and in the second year remaining groups are there. So P block में अपन first year में third A and fourth A group elements पढ़ना है. तो P block का definition बोला, last electron is present in the which orbital? P orbital. If the differentiating electron is present in p orbital, those elements are called as p block elements. They are present in the right side of the periodic table. There are 6 groups are present. So in our first year syllabus, third A and fourth A group elements are given. Today I am going to start these fourth A group elements. Fourth A group elements. Which are the fourth A group elements? Carbon, silicon, germanium, tin and lead. These are the fourth A group elements. What are the third A group elements? You know the third A group elements: boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Okay, these are the third A group elements. So fourth A group elements start with the carbon element. Fourth A group elements carbon से शुरू हो रहे. So what is the first element in the fourth A group? Carbon. Therefore all these elements together are called as carbon family बोल के बुला रहे. Okay, chemical family है, carbon family है. All these are similar because due to this type of the configuration, that is the general configuration of these group elements is NS2NP2. Okay, so carbon atomic number कितना है भाई? 6 है. तो configuration मैं लिखा हो तो 1s2, 2s2, 2p2 configuration आता. सिलिकॉन आप 6 को फिर क्या मिलाना? 8 मिलाना. 8 मिला तो इसका atomic number आता. So silicon का नंबर 14 है. कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2,
2 पे 6, यहाँ से 10 हो गए, और 3s2 3p4 इज द 3p2 इज द कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो वट एवर इट मे बी. उसके बाद जर्मेनियम है, हाँ, फिर इसको 18 मिलाना, फिर उसके बाद टिन है, उसके बाद लेड है. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था आपको? 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2 इज द कॉन्फ़िगरेशन. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, general last shell configuration is, that is the valency shell configuration of this group elements is ns2 np2 is the general electron configuration. That means these contains 4 electrons in their last shell, therefore these are present in the fourth group. 4 electrons है तो ये फोर्थ ग्रुप में रहते हैं. जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो पूरे फिफ्थ ग्रुप में रहते हैं. जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे सेवेंथ ग्रुप में रहते हैं. सो इन दिस ग्रुप कार्बन इज द नॉन मेटल एंड इट इज आल्सो नॉन मेटल. दीज आर द मेटलॉइड्स एंड लेड इज द मेटल. ओके, नाउ टॉप टू बॉटम देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीजेस, IE values also decreases, electron affinity values are also decreases. Top to bottom metallic character increases, non-metallic nature decreases. In this group last element is the lead, Pb. Remaining elements exhibits +4 oxidation state. This lead does not exhibit the +4 oxidation state because due to the what? Inert pair effect. Inert pair effect. What is the inert pair effect? एक बार एग्जाम में पूछा है. देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लास्ट शेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते. ओके, yes, ns orbital electrons are not participated in the bonding. It is called as the inert pair. Inert means reaction में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा. लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होना था, नहीं हुए. ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, last element lead exhibits +2 oxidation state only. Like that only at here thallium भी actually +3 oxidation state exhibit करना था, मगर thallium का जो oxidation state है +1 है. What is the inert pair effect? Write examples. अगर बोला तो ये definition लिख के 2 examples लिख सकते हैं आप. What is the definition? Last shell s orbital electrons are not participated in the bonding. It is called as inert pair effect. Due to this inert pair effect, thallium exhibit +1 oxidation state and lead exhibits only +2 oxidation state. And also in the fifth group, bismuth exhibits +3 oxidation state. These are the examples for the inert pair effect. Now next, catenation property के बारे में बोल रहा हूँ. Catenation, fourth group elements में कैटनेशन रहता. कार्बन की कैटनेटिंग एबिलिटी ज्यादा है. सेल्फ लिंकेज ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म द बिग कंपाउंड, बिग चेन, लंबी चेन फॉर्म करना, यानी तो ऐसी साइकिल फॉर्म करना. इट इज कॉल्ड एज द कैटनेशन. सेल्फ लिंकेज ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन और साइकिल्स is called as catenation. Catenation. What is catenation? ऐसा पूछ लेता तो self linkage of the element to form the big chain or cycles is called as catenation. Most catenating element in the periodic table is the carbon only. कार्बन की लंबी चेन फॉर्म होती है, इसके पास catenating ability ज्यादा है. Now then फिर इसके बाद में the next thing is what is allotropy. एलोट्रोपी किसको बोलते हैं? व्हाट इज एलोट्रोपी? तो ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये व्हाट इज एलोट्रोपी बोल के पूछ रहा. राइट द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. एलो मींस डिफरेंट है, डिफरेंट ट्रोपी मींस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स है. फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन कोल के जैसा मिलता, कोक के जैसा मिलता, और डायमंड में भी कार्बन है और ग्राफाइट में भी कार्बन है. एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मिलने को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी. दैट मींस एग्जिस्टेंस ऑफ द वन एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स. एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स in two or more different physical
forms, but with almost all, but with almost all similar केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए एटॉमिक नंबर भी नहीं बदल रहा और लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं बदल रहा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ऑल सेम रहते, फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग रहते, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहते। ये फिनोमिना ये इसको क्या बोल के बुलाते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट टू into are more different physical forms but with almost all same chemical properties is called as allotropy. So carbon के allotropic forms है, carbon carbon is present in different forms, carbon के crystalline forms है, allotropic forms of carbon. So carbon forms the various, carbon is present in various forms. फर्स्ट टाइप क्रिस्टलिन में भी रहते, क्रिस्टलिन फॉर्म्स भी है इसके, एंड सेकेंड वन नॉन क्रिस्टलिन फॉर्म्स, नॉन क्रिस्टलिन फॉर्म्स। क्रिस्टलिन फॉर्म्स में फर्स्ट वन इज द डायमंड, डायमंड इज द वन फेमस क्रिस्टलिन फॉर्म, सेकेंड वन इज द ग्राफाइट, ग्राफाइट, थर्ड वन इज द फ्लोरीन्स, फ्लोरीन्स। these three are the crystalline allotropic forms. एंड नॉन क्रिस्टलिन फॉर्म्स में कोल है, COAL कोल, और उसके बाद कोक है, वुड चारकोल है, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, शुगर चारकोल, गैस कार्बन, गैस कार्बन, गैस कार्बन, फिर उसके बाद में लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक, ऑल दीज आर द amorphous forms, non crystalline forms। crystalline का मतलब एटम्स रेगुलरली अरेंज होके रहते, सही प्रॉपर मैनर में अरेंज होके रहते। यहाँ पे नॉन क्रिस्टलिन मीन्स एटम्स रैंडमली इधर उधर अरेंज होके रहते, रेगुलर जियोमेट्री में नहीं रहते। तो ये फॉर्म्स में इन लोगों के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन में बार बार पूछ रहा। तो पहले आप लोग एलोट्रोपी क्या है, राइट अबाउट दी forms, allotropic forms of carbon बोले तो ये लिख लेना। Allotropy means existence of the elements in two or more different physical forms with almost all same chemical properties। एक एलिमेंट दो या तीन फिजिकल फॉर्म्स में मिल रहा भाई, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ऑल सेम है, तो ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोल के बुला रहे हैं। Now next, allotropic forms of carbon. Carbon exhibits, or carbon is present in various forms. Among them, some are crystalline and some are non-crystalline. Crystalline forms diamond, graphite, and fluorine. These are the crystalline forms. Non-crystalline में coal, coke, wood charcoal, animal charcoal, sugar charcoal, gas carbon, lamp black. All these are the amorphous forms. चलिए वन बाय वन पढ़ेंगे। अब डायमंड, एक चैप्टर में डायमंड एंड ग्राफाइट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों है, राइट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट और उनके प्रॉपर्टीज पूछता, बीएसए के इसमें पूछता। इन दिस चैप्टर दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन diamond and graphite। So I am explaining this answer बेटा, ये आंसर समझा रहे हैं। Diamond, in the diamond carbon undergoes, first you see that carbon atomic number is 6, 1s2, 2s2, 2p2। so excited state configuration लिख रहा हूँ, 2s1, 2p3, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हाइब्रिडेशन समझा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आता बोल के देखिए ऐसा। तो सब नहीं लिखना है आपको। इन द डायमंड कार्बन अंडरगोस sp3 hybridization, no need to write this configuration। so in the diamond carbon undergoes sp3 hybridization, each carbon in the diamond, number of carbons are joined together and forms the diamond। so ये देखिए एक कार्बन, हर एक कार्बन डायमंड में sp3 hybridization में पार्टिसिपेट हो रहा। as a result of this sp3 hybridization 4 hybrid orbitals are formed,
These four once again overlaps with the ये जो four है ये remaining carbon atoms के hybrid ऑर्बिटल से ओवरलैप होते हैं और इसके फोर ऑर्बिटल्स ऐसा ओवरलैप हो रहा है remaining ऐसा as a result of the three-dimensional polymeric network is formed. Okay, this is about the first thing. In the diamond, carbon undergoes sp3 hybridization. Okay, as a result of that, four hybrid orbitals are formed. Each hybrid orbital overlaps with the remaining four carbon atoms. As a result of that, we will get the polymeric, three-dimensional polymeric network shape. In the diamond, three-dimensional polymeric network of the carbon is present with the, so in the diamond each carbon is present with the single covalent bonds. ऐसा कार्बन 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 के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स से बाइंड होके रहते each carbon is binded with the strong covalent bonds. Therefore, due to the presence of this single strong covalent bonds, a diamond diamond is the known hardest material है. What is the reason why diamond is hard? Means because due to the presence of this single covalent bond, strong covalent bonds are present and the carbon undergoes sp3 hybridization. Due to this, strong covalent bonds are formed, sigma bonds are formed. Due to this, diamond is the hard one and it is having high melting point value. Bond break करना, melt होना बोले तो ज़्यादा temperature तक heat करना. It is having high melting point value. It is stable up to the 2000 degrees C. Okay. Then about the see that all our binded electrons are present. देखिए इन और एक कार्बन से ओवरलैप हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन सब बचे हुए नहीं रहते. All or the paired electrons are present. Due to the absence of these free electrons, absence of unpaired electrons नहीं है अब डायमंड में, पूरे bonded electrons है. So therefore, diamond is the insulator of electricity. Electricity अपने से पास नहीं करता. फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, डायमंड में कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन की वजह से फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं. ईच वन ओवरलैप्स विद द रिमेनिंग फोर कार्बन एटम्स लाइक दिस. रिमेनिंग कार्बन एटम्स एंड दिस कार्बन एटम्स अतराफ कार्बन के कार्बन एटम्स ऐसे घेरे हुए रहते हैं. ड्यू टू दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डायमंड इज द हार्ड मटेरियल. फिर उसके बाद में हाई मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू रहता. Then all are paired electrons, no free electron is present in the diamond. It is the insulator of electricity. Due to this hardness, ये इसकी वजह से ये डायमंड हार्ड है और इसीलिए डायमंड को अब्रेसिव के ऐसा, कटिंग मटेरियल के ऐसा यूज करते हैं, ग्लास और मेटल को कट करने के वास्ते यूज करते हैं. सो दिस इज द यूज. एंड फिर ये सिंगल कोवेलेंट थ्री डायमेंशनल पॉलीमरिक नेटवर्क शेप रहने से इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहती, तो इसीलिए ये चमकता. तो लाइट इंसिडेंट होते डिफ्रैक्शन में आ जाती, तो इसको ज्वेलरीज में यूज करते. इट इज यूज्ड इन ज्वेलरीज ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये डायमंड के बारे में है बेटा. once again मैं रिपीटिंग दिस, डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है, इसीलिए ये हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू रहती. And it is the insulator of the electricity. Due to the paired electrons, there is no free electron is present. Due to its more refractive index, it is used in jewelries. Next, because it is the hardest substance, therefore it is used for cutting of the glass and metals. This is about the diamond. Next class I will explain about the graphite and fullerenes, and remaining questions I will explain. Inshallah, we'll continue tomorrow. Assalamu alaikum.